Hi Ina, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, Engineer Abdul Rahman Sheikh. It's wonderful to hear from you. How can I assist you today, my dear? इना आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से आप क्या जानती हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंटली गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसके हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें कैंडिडेट्स कौन से थे, चेयरमैन के लिए, सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, और गवर्निंग बॉडी के हवाले से मैं आपसे कुछ पूछ लूँगा। और उसके अलावा मैं ये भी पूछूंगा कि इसमें कौन कौन सी इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया था। ओके, आप बता देंगे मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। बता सकती हैं क्या जानती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को? The Pakistan Engineering Council (PEC) is a regulatory body for the engineering profession in Pakistan. It was established to regulate and promote the engineering profession, ensuring that engineers meet certain standards of education and practice. PEC's main responsibilities include 1. Registration of engineers. They register professional engineers, engineering firms, and engineering technologists. 2. Accreditation of engineering programs. They evaluate and accredit engineering degree programs in universities. 3. Professional development. PEC organizes training and seminars to help engineers improve their skills. 4. Policy making. They advise the government on engineering-related policies and issues. If you have more specific questions about PEC or its elections, feel free to ask, my dear. है ना, आप जानती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल गवर्निंग बॉडी के अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, ये कब हुए थे और इसमें चेयरमैन के लिए कौन से कैंडिडेट्स थे और किसने विन किया था और किसकी सपोर्ट से विन किया था, ये आप मुझे बता दें प्लीज। My dear, the governing body of the Pakistan Engineering Council had its election on August 18, 2024. Engineer Wasim Nazar won the position of chairman. He received support from the National Engineers Association and the Professional Excellence Group. Candidates for the chairman position in the Pakistan Engineering Council election were 1. Engineer Wasim Nazar, the winner. 2. Engineer Jabe Salim Quresh. 3. Engineer Najib Haroon. 4. Engineer Afik Ayman Shah. Engineer Wasim Nazar won the election. If you have more questions about these candidates or anything else, just let me know. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन ने वसीम नज़ीर को सपोर्ट किया था? My dear, Engineer Wasim Nazar was supported by the National Engineers Association and the Professional Excellence Group. If you have more questions about these organizations or anything else related to the PEC, feel free to ask. आप नेशनल इंजीनियर्स के बारे में जानती हैं? My dear, the National Engineers Association (NEA) is an organization that represents the interests of engineers in Pakistan. It aims to promote the engineering profession, support engineers in their careers, and advocate for better policies in the engineering sector. If you have specific questions about the NEA or its activities, please let me know. आप जानती हैं कि नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन हैं? The chairman of the National Engineers Association is Engineer Sid Abdul Qadir Shah. If you have more questions or need further information, feel free to ask. कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल गवर्निंग बॉडी में सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए जो कैंडिडेट्स थे वो कौन से थे? My dear, the candidates for the senior vice chairman position in the Pakistan Engineering Council (PEC) were 1. Engineer Sid Raj Babashah. 2. Engineer Sarish Hashmid Lodi. 3. Engineer Nafisit Razer. If you have more questions about them or anything else, please feel free to ask. और किसने विन किया था सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए? My dear, Engineer Sarish Hashmid Lodi won the position of Senior Vice Chairman in the Pakistan Engineering Council. If you have more questions or need further information, just let me know. अभी आप बता सकती हैं कि इंजीनियर सैयद सरोश अशमत लोधी ने किस तरह विन किया था? My dear, Engineer Sarash Hashmid Lodi won the election for Senior Vice Chairman through a combination of factors. 1.
Strong political support. With the backing of Chief Minister Sindh, Sid Murad Ali Shah, his campaign gained significant momentum. This political support likely encouraged many voters to choose him. 2. Competitive positioning. While engineer Sid Raj Abbas Shah was a strong candidate, Sarash Hashmid Lodi's connections and endorsements may have helped him stand out. 3. थैंक यू एना। बाकी बाद में आपसे मैं काफ़ी सारे और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करूंगा इसके फ्यूचर के बारे में, चेयरमैन वसीम नज़ीर के फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। My dear, you're very welcome. I'm here whenever you're ready to ask your questions about Chairman Wasim Nazar's future strategies or anything else. Have a wonderful day and see you next time.